Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is ribosomes. Ribosomes. Ribosomes are small submicroscopic structures. Submicroscopic structures which are present in all eukaryotic and prokaryotic cells. Their main function is protein synthesis. They are themselves synthesized from they are synthesized from nucleolus of the cell. Nucleolus of the cell. It was Claude in 1941. He observed ribosomes and called them microsomes. It was Robinson and Brown. Robinson and Brown. They discovered ribosomes. They discovered ribosomes from plant cells. It was Platt in 1955. He isolated these ribosomes from animal cells, and the term was coined by ribosome term was coined by Roberts in 1958. Location. On the basis of location, ribosomes are of two types. One is cytoribosome and another is organelle ribosome. Organelle ribosome. The cytoribosomes are present in the cytoplasm of the cell, while as organelle ribosomes are present in the organelles such as mitochondria of the cell and plastids of the cell. The cytoplasm, the cytoribosomes, they are again of two types. One is free type and another is endoplasmic reticulum bound. Endoplasmic reticulum bound ribosomes और अटैच्ड राइबोसोम्स. मैं आपको सेल में दिखाता हूँ. Suppose this is a cell, this is nucleus, this is endoplasmic reticulum here. Endoplasmic reticulum. तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स. These are called endoplasmic reticulum bound ribosomes. This. And some are free. Those which are free, this is free and this is endoplasmic reticulum bound ribosomes. Those which are free, they help in the synthesis of structural enzymatic structural enzymatic proteins, and which are used, they are used by the cell itself, used inside the cell, while the endoplasmic bound ribosomes, they synthesize proteins for
transport to the site of need. The number of ribosomes is generally 10,000 to 30,000 in each cell. 30,000 in each. However, uh, their number reached 10 million in some cells. It is very high. The number is very high in uh, pancreatic and liver cells because they have to synthesize more of enzymatic proteins, more enzymatic proteins. Now, their chemical composition. The ribosomes are made up of RNA and proteins, and the RNA is ribosomal RNA. In eukaryotes, in eukaryotic cells, the proteins are the RNA is 40%, while as proteins are 60%. In prokaryotes, the RNA is 60% and proteins are 40%. Now I will tell you about the structure of ribosome. The ribosome, it consists of two subunits. One is larger subunit and another is, sorry, this is larger subunit and another is smaller subunit. Smaller subunit. They have different shapes. The smaller subunit, it has oval shape. Smaller का oval shape है और जो larger subunit है, larger subunit it is somewhat dome shaped in structure. मैं इसकी भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ. जो small है, it is oval. It has structures like platform, head, cleft, and base. While as the larger one, which is dome shaped, it has structures like protuberance, ridge, and stalk. I will show you it in the diagram. This is oval shaped. This is smaller subunit, and this one is larger subunit. It is dome shaped in structure. This is head. This is this ridge portion. It is cleft. This is base portion, and this portion, it is palate form. Whereas the larger one, it has stalk, this stalk, and ridge. This is ridge, and here it is next protuberance. Now I will tell you about types of ribosomes on the basis of coefficient sedimentation coefficient. Ribosomes are again of two types. One is 70S and another is 80S ribosome. 70S is present in prokaryotes and 80S is present in
eukaryotes. 70S is also present in the organelles such as plastids and mitochondria. Plastids plus mitochondria. हम 70S की बात करेंगे पहले. 70S ribosome, it has two subunits. This is larger subunit. It is made up of 50S sedimentation coefficient, and this is 30S. In prokaryotes, this is prokaryote. While as in eukaryotes, the larger subunit is has sedimentation coefficient of 60S, while as the smaller one is 40S. कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये प्रोकैरियोटिक और जो ये 70S वाला और ये 80S इन यूकैरियोट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया. 70S and 80S, two types. It is present in prokaryotes, it is present in this type of ribosome. This type of ribosome 50S and 30S subunits. It means 50 और प्लस 30 it means 80S. तो बनता है ये वाला. तो 60S और 40S हो गया 100S. तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ये क्या मसला है. सपोज दिस इज़ अ पेन. दिस इज़ निब ऑफ द पेन. इट इज़ 10 सेंटीमीटर्स और जो कैप है इसकी इट इज़ 5 सेंटी. दिस इज़ कैप फॉर एग्जांपल. मैं कैप बनाता हूँ यहाँ पर. ये कैप है इसका. तो इट इज़ 5 सेंटीमीटर्स. तो टोटल बनता है ये 15 सेंटीमीटर्स. चल लेकिन जब मैं पेन को क्लोज करूँगा तो ये कैप और ये इस कैप का कुछ हिस्सा इसके ऊपर हो जाता है, तो ये मर्ज हो जाता है इसमें. तो टोटल साइज बनता है फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर. यानी कि इससे कम बन जाता है जब ये आपस में मिल जाते हैं. इसी सेम इज द केस विथ दिस 30S और 50S. ये मर्ज होके तो लास्ट में इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है टोटल में 70S बनता है. और जो ये 40S और 60S तो आफ्टर मर्जिंग इस पेन की तरह तो ये बनता है. जो 50 सेंटीमीटर वाला था ये 12 सेंटीमीटर बन गया. तो इसी तरह से 40 और 60 सेंटीमीटर वाला 80S. अब जो ये 50S वाला सब यूनिट है, इट कंटेन्स 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड 23S राइबोसोमल आरएनए और दूसरा आता है इसमें 5S राइबोसोमल आरएनए. इट मीन जो ये वाला पोर्शन है प्रोकैरियोटिक का जो लार्जर सब यूनिट है, it is also made of proteins and ribose type of RNA. लेकिन राइबोस टाइप ऑफ आरएनए में फिर से इसके देर आर टू टाइप्स. वन इज 23S टाइप, वन इज 5S राइबोसोमल आरएनए टाइप. तो आप सोचोगे कि ये क्या मसला है इसमें. एक्चुअली जो ये 23S वाला है 5S सबका अलग अलग काम होता है. क्योंकि जब जो ये राइबोसोम है प्रोटीन्स में जब ये काम करता है तो किसी का काम है ट्रांसफ़र आरएनए को अटैच करना, किसी का काम है मैसेंजर आरएनए को अटैच करना, किसी का काम है जो इसमें फिट करना, वहाँ पर रीड करना. तो ये अलग अलग काम होता है इनका. इसी तरह से जो 30S वाला पोर्शन है इसमें एक ही किस्म आता है 16S टाइप राइबोसोमल आरएनए और इसमें आते हैं 21 प्रोटीन्स. तो इसी तरह से जो ये 80S वाला है तो यहाँ पर ये 60S जो सब यूनिट है इसका तो इसमें आते हैं 40 प्रोटीन्स. इट इज़ मेड अप ऑफ 40 प्रोटीन्स. और जो आरएनए है इसमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट इन इट. वन इज 20S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए. इसी तरह से आता है यह है 5.8 और दूसरा आता है ओनली 5S राइबोसोमल आरएनए. इसी तरह से जो ये छोटा वाला पोर्शन है इसमें 40S का सब यूनिट है. इसमें आता है इट कंटेन्स 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड 18S राइबोसोमल आरएनए. अब हम आते हैं फंक्शंस पे. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि फंक्शंस है. इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस ये एक द टू सब यूनिट्स
the two subunits, smaller and larger, two subunits. They encloses a tunnel for passage of messenger RNA. Passage of messenger RNA. They are called protein factories. प्रोटीन फैक्ट्रीज। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस में ये कैसे काम करते हैं। ये राइबोसोम है, तो बीच में ये एक टनल बनाते हैं, तो इस टनल से पास हो जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए पे एक इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है इन ट्रिपलेट कोड। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक एक कोड बनाते हैं यहाँ पर, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये राइबोसोम क्या काम करता है, ये इसको रीड करता है, ट्रांसलेट करता है इसको, इस मैसेज को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जैसे कि आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में शायद पढ़ा होगा। जो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ये खुद राइबोसोम भी बनता है, और ट्रांसलेशन में क्या काम करता है ये राइबोसोम, ये रीड करता है इस मैसेज को, तो ऑर्डर